Greetings of the day, everyone. I welcome you to Grade 6 English Communication classes. Let's begin today with our chapter number 1. And when we see the chapter number 1, I hope everybody is also able to see the same in their workbooks. Please, everyone, open your workbooks to chapter number 1. So, when we see the chapter number 1, I'm sure you will be able to see in your workbooks, it is about your introduction. And today we are going to learn that how do you introduce yourself in English language. I hope everybody is able to understand what I just said. आज हम अपना इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे which is in our chapter number 1. So please everyone, आप अपना chapter number 1 open करेंगे अपनी workbooks में and you will be able to see your introduction which is written there. तो क्या हम सब ने workbooks open कर ली हैं? क्या आप चैप्टर नंबर 1 देख पा रहे हैं? एंड लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि हम अपना परिचय कैसे देंगे इंग्लिश में. सो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर वी स्टार्ट introducing ourselves with understanding that before we proceed, हम सबसे पहले जिनके सामने आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, we try to thank them कि आप हमें सुनने के लिए रेडी हैं. So we first start, it is a pleasure to introduce myself. And यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने नाम से. Because जिसको भी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, they would like to know what is your name, of course. So let's begin. It is a pleasure to introduce myself. My name is, everybody please write down your name. Also आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्टूडेंट गलत स्पेलिंग ना लिखें और ना लर्न करें. So we have a word here which is it is a pleasure. So pleasure के spellings please make a note of it. It's Pleasure. I hope सब बच्चों ने प्लेजर के स्पेलिंग करेक्टली नोट डाउन कर लिए हैं. एंड ऑल्सो रिमेंबर हाउ डू वी प्रोनाउंस द वर्ड. सो इट इज प्लेजर. आई रिपीट, प्लेजर. कम ऑन, लेट्स से इट वंस अगेन. एवरीबडी विद मी, प्लेजर. आई होप आपने प्लेजर का मीनिंग नहीं समझा, बट यस ऑफ कोर्स प्लेजर के स्पेलिंग्स एंड उसके कैसे बोलना है दैट यू हैव अंडरस्टूड. अब हम चलेंगे मीनिंग के ऊपर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेजर? प्लेजर मीन्स दैट यू फील हैप्पी अबाउट इट, कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप खुश हैं, आपको लग रहा है कि यू आर ऑब्लाइज्ड दैट यू आर एबल टू गिव योर इंट्रोडक्शन. आगे बढ़ते हैं विद द सेकेंड सेंटेंस, माई नेम इज एंड प्लीज राइट डाउन योर नेम्स. सो अभी तक आपने 2 sentences लिखे हैं. लेट्स हैव अ रिपीट ऑफ इट. फर्स्ट इज, इट इज अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. द सेकेंड सेंटेंस इज, माई नेम इज, एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम. Let's take an example. My name is Sadigi, so I'm going to write, it is a pleasure to introduce myself. My name is Sadigi, and also write your last name. Like my last name is, which is Bharti. For me, it is Bharti, so I'm going to say, my name is Sadigi Bharti. Yes, everybody, I hope अभी तक हमने 2 sentences बहुत clearly note down कर लिए हैं. Let's move towards our third sentence, which is the meaning of your name. So the other person would be curious to know what is the meaning of your name. आपका मतलब क्या है नाम का? So we tell also the name, the meaning of your name, and you're going to say, the meaning of my name is, please ask your teachers, your parents कि आपके meaning क्या है आपके नाम का. And then you're going to write the meaning of your name. Again, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ. मेरा नाम है सादगी और मेरे नेम का मीनिंग है हिंदी में which is simplicity. So I will make the sentence, the meaning of my name is simplicity. As you can see in your workbooks, यहाँ पर जो नेम लिखा है that is Mahesh Sinha, and that is why we tell that in the next sentence it is written, the meaning of my name is a great ruler. So similarly, all of you are requested to please ask your teachers and parents about the meaning of your name, and then you can write it down. Let's move towards the fourth sentence now.
and it begins with I hail from the city of joy, Kolkata. Now, we all belong to different cities, right? हम सब अलग-अलग शहरों से हैं, अलग-अलग villages से हो सकते हैं, अलग-अलग कस्बे से belong कर सकते हैं. So we are going to write whether it's a district, town, or maybe a small village, a city, maybe a metropolitan city. जिस भी city से आप belong करते हैं या village से, please write down the name of your city. यहाँ एक important word है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, that is I hail from. Now, the spellings, first of all, let's note down the spelling. H-A-I-L. Everybody who have made a note of the word hail, and the spelling goes like H-A-I-L. Now, what is the meaning of this word hail? So, hail means that you belong from. So, instead of writing that I belong to, we prefer to write that you hail from. Hail का मतलब है belong करना. So let's go ahead and write I hail from the village, and I want you to write the name of your village, your city, or your town. Yes, everybody, have you written that? Okay. Let's have a repeat of whatever sentences you have written. अगर किसी student का कुछ sentence miss हुआ है, no problem at all. I'm going to repeat this for you and let's see the repetition. It is a pleasure to introduce myself. That's the first sentence. My name is Mahesh Sinha, and all of you have written the meaning of your name along with your name. The third sentence, the meaning of my name is, write down the meaning of your name. The next sentence, I hail from the city of joy, like here it is given, but you need to write, आपको अपने village का नाम लिखना है. I hail from, and then write down the village, the name of the village. Let's take an example. For example, if you are from Kanuta, so we are going to say, I hail from the village Kanuta, Rajasthan. So this is how you tell about your village. Next sentence, I am a pupil of grade 6 of, write down the name of your school. यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, that is written महर्षि दयानंद स्कूल. वैसे आप सब लोग अपने स्कूल का नाम बताएंगे and also you will tell me about your grade. So we are going to say I am a pupil of grade 6 of, please everyone write down the name of your school. I hope everybody has written that. The name of your school. We all know the spellings of the name of our school. Please hurry up and write down the name of your school. Okay. When it comes to a word here which is given, that is pupil. क्या आप देख सकते हैं यहाँ एक word है pupil. अब इसका क्या मतलब है? What is pupil? The meaning of the word pupil is student. तो क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं लैंग्वेज में, हमने स्टूडेंट की जगह पर वी हैव यूज्ड अ वर्ड pupil. कुछ बच्चे इसको गलत ना बोले, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू रिपीट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, आपको उच्चारण समझ में आए that how do we actually pronounce the word. So it is called pupil. I repeat, pupil. How do we say it? Let's repeat with me, pupil. Come on everybody, say it, pupil. Now let's understand the spelling of the word pupil. It's very easy. We need to write P-U-P-I-L. I hope everybody has also made a note of the spellings. P-U-P-I-L, and we call it, yes you know, it's pupil. Let's move now towards our next sentence, and that is going to be about your favorite subjects. So when I was a kid, I really had inquisitiveness to know about mathematics. So my favorite subject back the time when I was in the school was of course mathematics. We can have different choices. हो सकता है आपको social studies पसंद हो, कईयों को drawing पसंद हो, art पसंद हो, civics, history. So you have to tell in your introduction that which subjects you find the most interesting. कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं. लेट्स राइट द सेंटेंस, और अंग्रेजी में इसको आप कैसे लिखेंगे, लेट्स चेक दिस आउट. सो वी आर गोइंग टू राइट माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. यस एवरीबॉडी, माय फेवरेट subjects are, give me two subjects which are your favorite.
Here it is written mathematics and science. Yes, everybody? Also make a note of the subject of favorite, that how do you spell the word favorite. So when you say the word favorite, the spelling goes like Favorite. So we call it favorite. And how do you pronounce the word? We call it favorite. Let's repeat. Everybody say with me, favorite. I hope you've understood how we pronounce and how do we spell the word favorite. Let's move ahead with subjects are mathematics and science. मैं होप करती हूँ कि आपने ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है. Yes, everybody, have you done that? That's great. So let's have a repeat right from the beginning. अभी तक आपने कौन से sentences लिख चुके हैं आप? Let's have a recall. It's a pleasure to introduce myself. My name is, please write down your name. The meaning of my name is, write down the meaning of your name. Next sentence, I hail from the city of, whatever the city is. If it has some adjective to it, please write down that. Otherwise, simple, you can write, I hail from the village, comma, the name of your village. I am a pupil. Okay, so as we have seen here that your favorite subjects are mathematics and science. हो सकता है आपके कुछ और subjects favorite हो. Please make a note that you have to write your own favorite subjects. जो आपके खुद के favorite subjects हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे. Let's move now to the next sentence. I like these subjects because I find them quite logical. Now you have to also give a reason कि आपके ये favorite subjects क्यों हैं. सो मैथमेटिक्स इसीलिए बच्चों को अच्छा लगता है बिकॉज काफ़ी लिखना नहीं पड़ता एंड इट्स वेरी लॉजिकल. यू नो वन फॉर्मूला एंड उसके बाद आप आगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं. सो वॉट एवर इज योर रीजन ऑफ लाइकिंग द सब्जेक्ट, प्लीज राइट दैट रीजन. अगर आपके भी ये सेम सब्जेक्ट्स फेवरेट है, सो यू कैन राइट that I like these subjects because I find them quite logical. Now there are two words here जिसका pronunciation थोड़ा सा difficult हो सकता है, but we are going to master it कि इनको कैसे बोलते हैं. The first word is quite. Don't call it quit or something else. Please call it quite. How are we going to say, everybody? Quite. Yes, everybody? Can you repeat with me? Quite. Great. Let's talk about the second word, logical. So how do we say? We say logical. Let's repeat, everybody, logical. Great. Now let's talk about the meaning. When we say quite logical, what is the meaning of saying quite logical? Which means काफी हद तक ये logical है. What is logical? Logical means something जिसके पीछे कोई reason हो. Reason, anything that has a reason is logical. You can also say because they are very rational. Okay, so let's move forward with the next sentence. I like these subjects because I find them quite logical, which means you have to give us reason कि आपके ये subjects favorite क्यों हैं. So अब इस sentence को देखेंगे जब आप, so you will find that there are 2 or 3 words जो कि difficult हैं. पहला, I like these subjects. यहाँ तक सबको ठीक है, easy है. मुझे ये subjects पसंद है क्योंकि. Now what is क्योंकि in English? We call it because. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको शायद ठीक ना बोल पाए. सो मेक अ नोट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड बिकॉज. इन इंडिया, इंडियंस व्हेन दे स्पीक इन इंग्लिश, हम इसको बिकॉज प्रोनाउंस करते हैं. ऑल्सो इस शब्द की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है. People there in Canada, America will call it because, and maybe in other parts of the world, the word would be because. So yes, this is how we are going to pronounce it. But as far as the Indians are concerned, we say it because. So I would recommend you can follow the same pronunciation and call it because. I like these subjects because I find them quite logical. Now, there are certain words in the sentence that could be difficult to pronounce, but I'll make it easy for you. Let's begin the first one. The first word that you can see in the sentence is subjects. I like subjects. This is easy, which means that मुझे ये subjects पसंद है क्योंकि.
Now, kyunki in English is called, the word is because, but most of the students would pronounce it incorrectly. They would call it because or maybe other pronunciation. But as far as Indian accent of English is concerned, we call the word because. So, everybody, are we okay with it? Yes. So, how are we going to call it? We call it because. At the same time, in other countries, जो बाकी countries हैं, उनमें इसका pronunciation because भी होता है. But yes, you have to say it as per the Indian English accent, which is because. So I like these subjects because I find them quite logical. Now, what is the meaning that we can see of two words which is quite logical, which means काफी हद तक ये subjects logical है. Logical के spelling please note down कीजिए. LOGICAL. And logical matlab we have reasons behind it. उसके पीछे reason है. So anything that has a reason is called logical. Let's go ahead and talk about the next sentence. And the next sentence is, as far as my hobbies are concerned. So what is the sentence? Come on, everybody, say it with me. As far as my hobbies are concerned. Remember two things in this particular sentence. First, are zarur aayega, and concern nahi bolna hai. If you see, there is an ed attached. So you're going to say, as far as my hobbies are concerned. Add ed with it. लिखते हुए भी don't make an error, do use an ed, and बोलते हुए आपको ध्यान रखना है that concerned में ड का sound जरूर आएगा. This is a very common error that people make when they are going to say the entire sentence. Yes, everybody. Now, what is the meaning when we say as far as my hobbies are concerned? हिंदी में इसका मतलब है जहां तक मेरी हॉबीज का सवाल है, and then you continue further कि आपकी हॉबीज क्या हैं. So let's see what are hobbies first of all. I hope everybody knows what hobbies are all about. Hobbies means something जो आपको free time में करना अच्छा लगता है. They are called your hobbies. Now everybody will write about their hobbies. जैसे कि हमने यहाँ देखा है, it is written, I love to play video games and chess. So please tell me your two hobbies that you like. You can have more than two also, but yes, at least you should tell about your two hobbies. I hope everybody has completed this sentence. Let's have a repeat of what you have learned in the previous sentence. As far as my hobbies are concerned, I love to play video games and chess. Now it's the time to move towards the next sentence, which is about your aim. Now, what is the meaning of the word aim? Aim means what is your objective? आप क्या करना चाहते हैं life में? So, आपका मकसद क्या है life का? We all should definitely have an aim in life, an objective of life. And this Mahesh Sinha tells us कि इनका aim है कि वो क्या बनना चाहते हैं. They want to become a doctor. So all my dear students, I hope that आपने भी grade 6 में आकर कुछ अपना aim बनाया होगा. आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, you can become an engineer, maybe an IS officer. So please write down about your aim in life. And how do we write that? My aim in life is to become, please write down what you actually want to become a doctor. एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंग्लिश में अगर आप इंजीनियर लिखना चाहते हैं, मेक श्योर यू राइट एन इंजीनियर. यस एवरीबडी, यहाँ आर्टिकल एक बदल जाएगा. आप अ डॉक्टर बोल सकते हैं, अ नर्स बोल सकते हैं, अ टीचर बोल सकते हैं, बट अगर आपको इंजीनियर यूज करना है, चेंज द आर्टिकल. एंड कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? यू विल यूज एन. व्हाई? बिकॉज जब आप इंजीनियर बोलते हैं, जो साउंड आप सुनते हैं दैट इज ए, which is a vowel, and we all know with vowels you always use an. I hope this is clear. Let's move forward to our next sentence. My strengths are my hard working nature and my family. So you are going to tell me about your strengths. Strengths मतलब ताकत. क्या चीज ऐसी है जो आपकी ताकत है? क्या चीज ऐसी है जो आपको प्रेरणा देती है कुछ अच्छा करने के लिए? And these are called your strengths.
So for Mahesh Sinha, he has written about his strengths, which are hard working nature, मतलब उसको मेहनत करना अच्छा लगता है, and the second is his family. So I would request all of you, let's make a sentence about your strengths. And how are we going to write it? My strengths. Remember the pronunciation. When you say the word, we call it strengths. Are we ready to listen again? Let's practice. Please repeat with me. How do we call the word? We call it strength. Let's say it once again. Strengths. So if you're using S, it's going to be strengths for you. I hope you have acquired the skill of pronouncing this word correctly. And here we go forward. My strengths are my hard working nature. It's a request. जो भी बच्चा ये सेशन करेंगे उनको ध्यान रखना है कि इसको हार्ड वर्किंग नहीं बोलना है. Generally, as per Indian English accent, we do not pronounce the R's here. So you are going to pronounce it as hard, no R, working, no R again. So we call the word hard working. Nature, spelling of nature, Nature. So ऐसे लगता है कि nature कुछ और होना चाहिए है ना, it should be nature, but we don't call that, we call it nature. So TURE English में जो combination बनता है TURE का, वो बहुत सारे words में we always call it chur. So remember, the TURE combination will give you the sound of chur. So we call it nature. Yes, everybody? The next sentence after that you have to work upon is, please write it down. I am blessed to be a part of such a supportive and caring family. So you are going to talk about your family now. And before we talk about our family, we always feel blessed. We always feel कि भगवान ने हमें इतनी अच्छी family दिया. I hope everybody loves their family and you are thankful to the Almighty कि आपको इतना अच्छा family दिया है. So we want to tell to the other person also कि I feel कि मुझे भगवान ने बहुत अच्छी family दी है. So how do we say that? We say I am blessed to be a part of such a supportive and caring family. Again, blessed का मतलब समझ में आ रहा है हम सबको. Blessed मतलब that we have been given आशीर्वाद of the God, right? That we have such a good family. And another word that you have here is supportive. Supportive means जो आपकी help करती है family, आपका ध्यान रखती है, आपकी care करती है. Such kind of a family is called supportive. Now let's see the spelling first. How do you write the word supportive? SUPPORTIVE. Let's repeat. It is SUPPORTIVE. I hope everybody has written the correct spellings. Now let's talk about how do we pronounce the word. So we call it supportive. How do we say it? We call it supportive. Yes, everybody? Let's say it supportive. Are we good with the word? Let's go ahead and talk about the next sentence now. My father is a teacher in a school, which means because you have talked about your family, अब आप बताएंगे आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है. जब आप ग्रेड 6 में होते हैं या इससे हायर क्लासेस में होते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स का नाम बताने का जरूरत नहीं है. सिंस वी आर also becoming mature enough, so we say that it's not appropriate to tell about the names of your parents. Instead, talk about their profession. जो छोटे बच्चे हैं, they can include the name of their parents maybe, but when you are a grader 6, there's no need to talk about their names. Let's begin directly with their occupation. So you are going to first talk about your father's occupation. Occupation क्या होता है? Occupation मतलब वो क्या काम करते हैं? So everybody has some work for their livelihood, right? तो पापा क्या करते हैं livelihood के लिए? आपको ये बताना है. So my father is a teacher in a school. Your father could be an engineer. Your father could be a doctor. Your father could be a farmer. So you have to talk about the profession or the occupation of your father, right? So my father is a, please write down the occupation. Like here it is written, my father is a teacher in a school and my mother is a homemaker. About your mother, if your mother stays at home, she takes care of everyone in the family. She's not a housewife, right? She has to be a homemaker.
सो देयर आर वर्ड्स इन इंग्लिश, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंगली बदल जाते हैं, एंड वैसे ही एक वर्ड है विच इज हाउसवाइफ. So we do not use the word housewife. This has got redundant from the dictionaries. So we now use the word homemaker. So homemaker मतलब मम्मी घर पे रहती है और सबका ध्यान रखती है. She takes care of the entire home and also the family members. Hence, she is called the homemaker. Yes, everyone. I hope you have understood this. Let's have a recap of the last sentence. You're going to talk about your father and your mother. तो कैसे बताएंगे इंग्लिश में? You will say that my father is a teacher in a school or my father is a farmer. जो भी उनका प्रोफेशन है, प्लीज उसको लिख लीजिए. And my mother is a homemaker. Homemaker. I hope the pronunciation is clear. Homemaker. I hope you have done this. Let's proceed further with the next sentence. Now it's the time when you tell everybody about your siblings. तो सबसे पहले क्या होते हैं siblings? Sibling means your brother or your sister. वो हैं आपके siblings. तो अगर आपका एक ही sibling है, you're going to say I have a sibling. एक से ज़्यादा है, so you can say I have two siblings. और दो से ज्यादा है, सो यू कैन राइट आई हैव 3 सिबलिंग्स. सो नंबर ऑफ सिबलिंग्स आपके जितने हैं आप वो लिख सकते हैं. बट महेश सिन्हा के केस में ही हैज रिटन अबाउट अ यंगर सिबलिंग. तो यंगर मतलब आपसे छोटे हैं, तो यंगर वर्ड यूज करेंगे. और अगर वो आपसे बड़े हुए, जैसे आप 6th में हैं, हो सकते हैं आपके सिबलिंग 7th में हो, 10th में हो, सो देन यू हैव टू से दैट आई हैव एन एल्डर सिबलिंग. लेट्स रिपीट दिस. जो आपसे बड़ा हो दैट्स एल्डर, और जो आपसे छोटा हो that's younger. So you're going to say I have a younger sibling and please tell the grade of that sibling of yours. So you're going to say I have a younger sibling who studies in grade 3, या जिस भी क्लास में वो पढ़ते हैं, you can also talk about that class. अगर आपसे बड़े हैं, so you will write I have an elder sibling. Please make a note of changing the article. Here it is written a, but when you write it, अगर वो आपसे बड़े हैं, आप elder use करेंगे and उससे पहले the article is an. I have an elder sibling. बड़े, छोटे, so you write younger sibling. And finally, you will end your introduction by saying that that's all about me. So today, I hope everybody has learned about their introduction. Let's have a repeat of whatever sentences you have written. अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ मिस किया है, तो जब मैं अभी दोबारा आपको रिपीट करवाऊंगी, आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए. And if there are doubts, you can ask us. They cannot ask me. आ गई, मुझे दिख ही नहीं रहा. Let's have a repeat of your introduction. We are going to start now a repetition of whatever sentences we have learned so far. Let's go ahead and read it. It is a pleasure to introduce myself. That's our first sentence. My name is Mahesh Sinha. You need to write your name. Let's have a recall of whatever sentences we have learned so far. It is a pleasure to introduce myself. My name is Mahesh Sinha. The meaning of my name is a great ruler. I hail from the city of joy, Kolkata. I am a pupil of grade 6 of Maharishi Dayanand School. My favorite subjects are mathematics and science. I like these subjects because I find them quite logical. As far as my hobbies are concerned, I love to play video games and chess. My aim in life is to become a doctor. My strengths are my hardworking nature and my family. I am blessed to be a part of such a supportive and caring family. My father is a teacher in a school and my mother is a homemaker. I have a younger sibling who studies in grade 3. That's all about me. My dear students, I'm sure that you have learned your introduction. जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन अभी आपके सामने प्रेजेंट की थी, आपने उसी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया है. आप देखेंगे अपनी वर्कबुक्स में देयर इज अ स्पेस प्रोविजन, आपने वहां नोट डाउन कर लिया होगा. आगे चलते हैं
कि फॉलो इसके बाद आपने इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से लर्न करने के लिए क्या करना है. सो लेट्स सी एप्लीकेशन में आप इसको कैसे लिसन करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे. सो एज यू कैन सी इन दी एप्लीकेशन दैट वी हैव दिस इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन है जो आपने अभी मेरे साथ लिखी थी. इस सेम इंट्रोडक्शन को आपने 3 to 4 टाइम्स रेगुलरली रिपीट करते हुए इसको सुनना है. सो फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू इट 3 to 4 टाइम्स. जब आप 3 या 4 बार इसको सुन लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग पे. अगर आपने बहुत अच्छे से लर्न करके बोला है, दैट्स ग्रेट. अगर आपको भी लर्न नहीं हुई है तो भी जस्ट मेक श्योर दैट आप ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी जरूर करें. So there are two icons as you can see. One is for audio recording and the other one is for video recording. Video recording हम last में करेंगे when you have prepared for your final exam. उससे पहले अभी के लिए आपको audio recording पर click करना है and you have to start your recording. जैसे ही आप play recording पे click करते हैं, आप अपना introduction को देखेंगे that वो record हो रहा है. Once you have recorded it nicely, जब आप अच्छे से record कर लेंगे, आप अपना फीडबैक लेंगे AI से. आपको टीचर से भी पूछने की जरूरत नहीं है. AI will help you to give the feedback of your recording. कोशिश कीजिए कि आपके 60% से ज्यादा स्कोर हो जब आप AI से फीडबैक ले रहे हैं. This will help you to make sure that your introduction is well prepared. जब आप इसको 3 to 4 टाइम्स सुन चुके होंगे इंट्रोडक्शन के, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है. सो यू हैव टू रिकॉर्ड योर सेल्फ और उसके लिए आप जाएंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जाकर आप अपनी इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. आप उसको रिपीटेडली रिकॉर्ड करेंगे जब तक आप श्योर ना हो कि आपने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर कर लिया है एंड नाउ यू आर रेडी टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द AI. आई होप आपने 3 या 4 बार अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से सुन लिया होगा एंड अब देखते हैं आगे आपको क्या करना है. आप जैसे देख सकते हैं देयर आर 3 बटन्स ऑन योर स्क्रीन. स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर as you can see there are 3 buttons on your screen: start recording, stop recording and play recording. तो सबसे पहले आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन को जब लर्न कर लिया, यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जाएंगे. आप अपनी इंट्रोडक्शन को ठीक से देखेंगे कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरह से आपने रिकॉर्ड करा है. जब आप सेटिस्फाइड हों उसके बाद आपने प्ले रिकॉर्डिंग पे जाना है एंड नहीं, प्ले रिकॉर्डिंग पे नहीं जाना. आई होप आपने 3 to 4 टाइम्स अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से सुन लिया होगा एंड सुनने के बाद आगे देखते हैं आपको क्या करना है. सो एज यू कैन सी देयर आर 3 बटन्स ऑन योर स्क्रीन: स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड प्ले रिकॉर्डिंग. आई होप आप अपना रिकॉर्डिंग सॉरी आई होप आप अपना नहीं आई एम श्योर आप 3 to 4 टाइम्स अच्छे से अपना लिसनिंग सॉरी अपना आई एम श्योर आपने 3 to 4 टाइम्स अच्छे से इंट्रोडक्शन को लिसनिंग सेक्शन पे जाके लिसन कर लिया है एंड अब आगे देखते हैं आपको क्या करना है. एज यू कैन सी देयर आर 4 बटन्स ऑन योर स्क्रीन. स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले एंड यू विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर ओन इंट्रोडक्शन. आई एम श्योर कि आपने उसको अच्छे से लर्न करके रिकॉर्ड करना है एंड जब आप उसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जाके अपना इंट्रोडक्शन बोलेंगे, यू विल गो टू द नेक्स्ट बटन. वंस यू हैव रिकॉर्डेड, आपने अच्छे से उसको रिकॉर्ड कर लिया, आप स्टॉप करेंगे. स्टॉप करने के बाद यू विल प्ले अगेन रिकॉर्डिंग जो आपने खुद करा है एंड अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि आपने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करा है, आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद योर ओन रिकॉर्डिंग कि आपने इंट्रोडक्शन बहुत ही बेटर तरीके से रिकॉर्ड करा, यू विल गो टू अपलोड एंड गेट AI फीडबैक और इस पे क्लिक करके आपको किसी भी टीचर से पूछने की जरूरत नहीं है. लिसनिंग दिखाओ तो सही नीचे मुझे. आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड योर इंट्रोडक्शन वेरी वेल जो अभी हमने करी थी. अब देखते हैं इसके बाद आपको क्या करना है. सो आप अपना वेब एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड वेब एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि आपको पहले अपना सेम इंट्रोडक्शन जो हमने अपनी वर्कबुक्स में नोट किया है, आपको इसको 3 to 4 टाइम्स सुनना है.
और सुनने के बाद आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। सुनने के बाद आप देखेंगे नीचे यू कैन फाइंड आउट कि इसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और एक वीडियो रिकॉर्डिंग के बटन्स हैं। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग हम फाइनल एग्जाम के टाइम करवाएंगे आपसे। एंड फिलहाल के लिए आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आप अपना इंट्रोडक्शन बिना देखे और अच्छे से लर्न करने के बाद you will click on the button which is start recording. जब आप satisfied हो रेगुलर रिकॉर्ड करने के बाद दैट आपने बिल्कुल वैसे ही बोला है जैसे आपने सुना है, जैसे मैंने आपसे इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करवाई है, उसके बाद you will click on play recording and will listen to your own introduction in your own voice. जब आप 100% satisfied हो जाएं इस रिकॉर्डिंग से जो आपने खुद करा है, then you will take the feedback of AI. इसमें आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप AI के थ्रू फीडबैक ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद AI विल गिव यू फीडबैक जो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। आप देख सकते हैं इस डेमो में 85 on 100 स्कोर है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कि कोशिश करें आपका AI रिकॉर्डिंग में जो स्कोर है वो 60% एटलीस्ट उससे ऊपर रहे। AI चेक करता है आपको ये फॉलोइंग पैरामीटर्स पे। द फर्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण कैसा है, आपकी फ्लुएंसी कितनी बेहतरीन हो पाई है, क्लैरिटी एंड ग्रामर। सो दीज आर 4 एरियाज जिसके ऊपर AI चेक करके आपको एक फाइनल स्कोर देगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू रियली एंजॉयड द सेशन। ऑल्सो अगर आपको देखना हो एक डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट योर फीडबैक, दिस इज हाउ यू कैन सी एक परफॉर्मेंस लेवल और डिटेल फीडबैक विल कम। Finally, the vowels, the pronunciation, you will be able to see कहाँ पर आपने क्या गलत pronounce करा। फीडबैक थ्रू AI जिसमें एक एक डिटेल्ड मार्किंग आपको नजर में आएगा कि आपने कैसे रिकॉर्ड करा है, आपके वाउल्स कॉन्सोनेंट्स कैसे प्रोनाउंस करे हैं। आप पैरामीटर्स भी देख सकते हैं, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या रेटिंग दिया है AI ने। अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विल बी देयर। उसके बाद आप लास्ट में जाएंगे, यू विल सी द बटन सेव एंड आर्काइव। यू विल सेव योर वर्क, द AI feedback, and this will be saved in the archive. This is how each and every assignment that you record yourself can be saved in the archive.